वेलकम फ्रेंड्स। आज हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स के तकरीबन 50 क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है इंटरव्यूज़ में अगर कोई आपसे एसएसपी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया तो इससे बाहर नहीं होगा। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें जितने भी मैं आंसर दिए हैं कोशिश की है कि आंसर टू द पॉइंट और कम्प्रीहेंसिव हो, ताकि आप वही जवाब दे के अच्छा इंटरव्यू अपना दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ प्रिमिटिव सेल? Answer is, it is the smallest unit cell volume which has one lattice point. Moving on to question number 2. How many lattice points do BCC and FCC have? BCC has 2 lattice points and FCC has 4 lattice points. Question number 3. What is the difference between single crystal and polycrystals? Answer is, in single crystals, periodicity of the lattice doesn't break throughout the crystal structure, whereas polycrystalline materials consist of so many grains which are randomly oriented, and these grains are separated by grain boundaries. Periodicity of the lattice breaks at the grain boundaries. Question number 4. What is lattice constant? The distance between two consecutive lattice sides या lattice points is called lattice constant. Question number 5. What is the difference between photons and phonons? ये बहुत ही important question है. Answer is, quanta of electromagnetic radiation is called photons, whereas quanta of lattice vibrations is known as phonons. Question number 6. What is the difference between lattice and basis? Answer is, geometrical points at definite arrangements are called lattice, whereas the group of atoms attached to these lattice points are called bases. Lattice and bases combine to form a crystal structure. Question number 7, ये भी बड़ा important question है. What is Fermi energy? Answer is, it is the energy of the highest field state at absolute zero. Question number 8. What is point group? Answer is, it is the group of symmetry elements in 2D. There are 32 point groups. Question number 9. What are Miller indices? Answer is, it is a system of notation which is used to describe the lattice points, direction and lattice planes. Question number 10. What is unit cell? Answer is, it is the smallest building block that repeats itself in either 2D or 3D to form an entire crystal structure. This is called unit cell. Question number 11 is, what is the difference between hydrogen and van der Waals bonding? Answer is, hydrogen bond is formed because of the permanent dipole moments, whereas van der Waals bond is formed because of the fluctuating dipole moment. Question number 12 is, which structure has maximum closed packing of atoms? FCC and SCP both have maximum closed packing of atoms, which is 74%. Question number 13. What is magnon and exciton? Answer is, quanta of spin waves is called magnon, and the bound electron hole pair is called exciton. Question number 14. What is K alpha and K beta X-rays? Answer is, when the incident electron strikes with the K shell electron and vacancy is created in the K shell. If an electron comes from the L shell and fills the K shell vacancy, then X-rays emitted in that case is called K alpha X-rays. If an electron comes from the M shell and fills the vacancy and fills the K shell vacancy, then X-ray emitted in that case is called K beta X-rays. Question number 15 is, what is first Brillouin zone? ये तो बहुत ही important question है. Answer is, it is the region in K-space
in which electrons can move freely without being diffracted is called first Brillouin zone. The region between minus pi by a to plus pi by a is called the region of first Brillouin zone. The concept of Brillouin zone gives the idea of understanding the allowed and forbidden band in solid. Question number 16 is what are crystal defects and imperfections? या defects भी पूछ सकता है कि imperfection भी कह सकता है, दोनों की बात एक ही है. Answer is any deviation from perfectly periodic arrangement of atoms in a crystal is called crystal imperfections or defects. Question number 17. What are point defects? Answer is zero-dimensional defects found in crystals are called point defects, such as vacancy, Frankel defects, and Schottky defects. Question number 18 is what are Schottky and Frankel imperfections? The answer is when an atom is missing from regular lattice side and goes to the surface of the crystal. This is called Schottky imperfection. Whereas in Frankel imperfection, an atom is missing from regular lattice side and goes to the interstitial side. The question number 19 is what are edge and screw dislocation? Answer is these are line imperfections. In edge dislocation, atoms are displaced along a line in such a way that they make an edge inside the crystal structure. Whereas in screw dislocation, atoms are displaced along a line in such a way that they make a helical pattern inside the crystal. Question number 20 is what is piezoelectric effect? ये भी एक अच्छा question है. Answer is it is a process by which electrical energy is converted into mechanical energy and vice versa. Question number 21 is what is elastic and plastic deformation? Answer is elastic deformation is temporary deformation produced in solid materials and it disappears when stress is removed, whereas plastic deformation is the permanent deformation which is produced when stress is applied beyond a certain limit and it persists although the stress is removed. This is called plastic deformation. Question number 22 is what are grain boundaries? Answer is grain boundaries are actually surface defects which are found in polycrystalline materials. Question number 23 is what is diffusion? Answer is it is the mechanism by which matter is transported through matter is called diffusion. Question number 24 is what are Fick's laws? Answer is Fick's laws are used to describe the diffusion mechanisms. Question number 25 is what is dispersion relation? Answer is it is the relation between angular frequency and wave vector. Question number 26 is what is X-ray diffraction? Answer is X-rays are electromagnetic radiations whose wavelength is almost similar to the interatomic spacing in crystals. So the whole crystal acts like a three-dimensional grating for X-rays. When X-rays are allowed to fall on a crystal, they get scattered and interfere constructively in a particular direction and where Bragg's diffraction conditions are fulfilled. XRD technique is used for the study of crystal structure. Question number 27 is what is Moseley's laws? ये बड़ा important question है. Answer is according to Moseley's laws, the frequency of the characteristic X-rays depends on the atomic number of the targeted material. बाज़ वक़्त वो इसका फार्मूला ही पूछ लेते तो इसका फार्मूला ये आपने याद कर लेना है. फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन है, किस तरह डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर पे, ये आपने फार्मूला याद कर लेना है. क्वेश्चन नंबर 28 इज व्हाट इज ड्यूलोंग एंड पिटेट्स लॉ? इसे कहते हैं क्लासिकल लॉ भी कहते हैं. तो इसका आंसर इज अकॉर्डिंग टू ड्यूलोंग एंड पिटेट्स लॉ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट and it doesn't
डिपेंड भी आना था सॉरी, एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी. क्वेश्चन नंबर 29 इज व्हाट इज फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल. आंसर इज according to free electron model, electrons in metals are totally free and they are not under the influence of positive ion cores, and electrons move in a uniform potential produced by positive ion cores. This model successfully explains certain phenomena like electric and thermal conductivity, thermionic emission, etc. But इसका जो फेलियर है वो ये है, बट दिस मॉडल couldn't explain why certain materials are conductors, semiconductors and insulator. और ये जो ड्रॉबैक है वो ये रिमूव हुआ था नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में. वो मॉडल जो है ना वो सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर सकता था कि कौन सा मटेरियल कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर है, जिसमें फर्मी बैंड गैप का भी वो कंसेप्ट भी वहीं इंट्रोड्यूस कराया गया था. क्वेश्चन नंबर 30 इज what is thermionic emission. Answer is when a metal is heated, electrons are emitted from its surface. This phenomena is called thermionic emission. एक इस तरह कोल्ड एमिशन भी होता है, वो आपकी असाइनमेंट है, वो खुद जाके देखो. अगर नहीं आपको आंसर मिलता है मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में. क्वेश्चन नंबर 31 इज व्हाट इज अ हॉल इफेक्ट. ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है. आंसर इज when a rectangular metal slab carrying current density in x direction is placed in a uniform magnetic field whose direction is perpendicular to the current density, the voltage called Hall voltage is produced which is perpendicular to both current density and magnetic field. This unique phenomena is called Hall effect. Question number 32 is what is band theory in solids. Answer is according to band theory of solids in insulators, there is a huge band gap between valence band and the conduction band, almost 5 electron volt का होता है, and electrons need massive amount of energy to cross this band gap. That is why insulators don't have free electrons and can't conduct electricity, whereas there is no band gap in conductors because क्योंकि overlap होते हैं दोनों band, so they have plenty of free electrons and can conduct electricity, whereas in semiconductors there is a narrow band gap, almost 1 electron volt का होता है, so electrons need less amount of energy to go from valence band to the conduction band, so their electrical conductivity is more than insulators but less than conductors. Question number 33 is what is effective mass. ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स में बहुत पूछा जाता है. The effective mass of electrons comes into existence when there is an interaction of electron wave with the periodic lattice. It is positive at the bottom of the band and negative at the zone boundary. Question number 35 is what is Fermi surface. जो मैंने पहले क्वेश्चन दिया था ना वो था what is Fermi energy. ये है what is Fermi surface. ये देख लेना कौन क्या सवाल पूछा जाता है उसके मुताबिक जवाब देना. Fermi surface क्या है. इस आंसर इज it is the surface of constant energy in K-space. Below this surface all the states are filled by valence electrons and above this surface all the states are empty. Actually it is the boundary between filled and unfilled states of electrons in metals at absolute zero. This surface is called Fermi surface. Question number 36 is what are dielectric materials. Answer is dielectric materials are those materials in which electrons are tightly bound with the nucleus. ये होते इंसुलेटर की तरह हैं लेकिन इसमें जो यूनिक फिनोमिना होता है वो होता है पोलराइजेशन का जो कि इंसुलेटर्स में नहीं होता. अच्छा आंसर क्या बता रहा था मैं. डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड विद द न्यूक्लियस बट व्हेन दीज मटेरियल्स आर प्लेस्ड इन द हायर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड positive and negative charges are displaced at a certain distance, so material gets polarized where polarization phenomena is exhibited. Question number 37 is what is polarization. बाद का क्वेश्चन पूछा जाता है what is the difference between polarization and magnetization.
तो मैग्नेटाइजेशन आपने खुद देखना कि क्या होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट्स पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट्स पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 38 इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस। आंसर इज fluorescence. It is a process in which a material takes energy in the form of photons and re-emit this energy within 10 raised to the power minus 8 second. But the emitted photon has frequency less than the incident photon frequency. This phenomena is called fluorescence. Whereas in phosphorescence, a material takes energy and re-emit it after some time, even after some hours. और इसमें एक और भी बात होती है कि इसमें इंसिडेंट और जो एमिटेड फोटोन है दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम होती है। अब क्वेश्चन नंबर 39 इज व्हाट आर कलर सेंटर्स। ये बात को पूछ लेता है जब बहुत ही हाई प्रोफाइल सॉलिड फिजिक्स का अगर सर आया हो। कलर सेंटर्स आर बेसिकली लेटेस्ट imperfections which absorb visible light and therefore some insulating material seems to be colored. ये बिल्कुल जो बेसिक डेफिनेशन मुख्तसर जितनी हो सके मैंने इतनी बनाई है, इतना भी ये जवाब दे के आपका आंसर सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 इज व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ लेजर एंड मेजर। लेजर स्टैंड्स फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, वेयर एज मेजर स्टैंड्स फॉर, इसको मॉलिक्यूलर भी कहते हैं माइक्रोवेव भी कहते हैं, दोनों ही चल जाता है, आप दोनों कह देना मॉलिक्यूलर और माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 41, ये बात का क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इज टू लेवल लेजर एंड मेजर पॉसिबल। द आंसर इज टू लेवल लेजर इज नॉट पॉसिबल वेयर एज टू लेवल मेजर इज पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 42 इज व्हाट आर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। जब मैं फेरो बता रहा हूँ आप पैरा और डाया और एंटी फेरो और फेरी की डेफिनेशन में देख लेना, ये कुछ ना कुछ पूछ लेता है, बाजू का फेरोमैग्नेटिक पूछता है। आंसर इज ferromagnetic materials are those materials which have spontaneous magnetic movements even in the absence of external magnetic field. This spontaneous magnetization is exhibited below a certain temperature called Curie temperature. Above Curie temperature, ferromagnetic materials are converted into paramagnetic materials. Question number 43, what is Néel temperature? Curie temperature और Néel temperature, इन दोनों को आपने याद करना है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने क्यूरी टेम्परेचर पहले बता दिया क्या होता है, नील टेम्परेचर सुन लो। नील टेम्परेचर, इट इज द टेम्परेचर एट विच एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44 इज व्हाट इज मैग्नेटिक मोमेंट। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर इज इन मैग्नेटिक मटेरियल्स ड्यू टू ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ईच एटम एक्ट्स लाइक अ टाइनी मैग्नेट, so each atom has certain magnetic field that is called magnetic moment. इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए which is equal to mu is equal to I dot A. Question number 45 is what is Curie law। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, बाज़ औक़ात रिटन टेस्ट में भी और बाज़ औक़ात इंटरव्यू पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। what is Curie law। इस तरह Curie Weiss law भी होता है। Curie law is applicable on paramagnetic materials. According to this law, magnetic susceptibility of paramagnetic materials decreases with the increase of temperature. इसका फार्मूला याद कर लो, magnetic susceptibility is equal to constant over temperature. Question number 46 is what is superconductivity। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। Answer is it is a phenomena in which certain materials exhibit zero resistivity below a certain temperature. This phenomena is called superconductivity and the materials which exhibit superconductivity are called superconductors. Question number 47 is what is Misner effect। ये तो बहुत important question है। Answer is when external magnetic field is applied to the superconducting specimen, all the external magnetic lines are expelled out and inside the superconducting specimen B is equal to 0. This phenomena is called Misner effect.
क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट आर सॉफ्ट, ये इसको टाइप 1 भी कहते हैं, एंड हार्ड टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। आंसर इज द सुपर कंडक्टर्स विच एग्जिबिट कंप्लीट मेसनर इफेक्ट इज कॉल्ड या आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स, एंड whereas those superconductors which don't exhibit complete Meissner effect are called hard superconductors या type 2 superconductors। क्वेश्चन नंबर 49 is what are super electrons, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुपर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? आंसर इज super electrons are expected to be present in superconductors which have zero entropy and they experience no scattering। ये इसकी खसूसियात हैं जिसकी वजह से सुपर कंडक्टिविटी होती है। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज BCS थ्योरी, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो बाद में पूछा जाता है। आंसर इज Brillouin, Cooper and Schrieffer presented their famous theory called BCS theory in which they tried to explain how superconductivity is produced in superconducting materials. According to this theory, electron interaction via lattice deformation and Cooper pair are the reasons for superconductivity in superconductors। ये दो मेन वजूहात इसके लिए सुपरकंडक्टिविटी होती है सुपरकंडक्टर्स में अकॉर्डिंग टू BCS थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 51 इज व्हाट इज डिसम्पशन इफेक्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है जो पूछा जाता है बाज़ औक़ात। आंसर इज व्हेन टू सुपरकंडक्टर्स आर सेपरेटेड बाय नैरो इंसुलेटिंग लेयर या इंसुलेटिंग मटेरियल। Besides tunneling of normal electrons, super electrons can also tunnel through a barrier. Even in the absence of any external potential difference, this unique phenomena is called dissumption effect। 52 क्वेश्चन नंबर, I think आज लास्ट क्वेश्चन है। What is K-space? बाप के पूछ लेता है K-space क्या होता है। आंसर इज The K-space has tremendous importance in solid state physics because it represents the frequency information into 2D और 3D of an object। 52 हो गया। आज के लिए इतना ही गाइस। ओके, गुड बाय। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह या तो मॉडर्न फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स को डिस्कस किया जाएगा। गुड बाय।